Hello, good morning from Khopra Ridge. Crazy here. So, Khopra Ridge, a word and a place that had been in my mind for months now because I had been planning a trip here. And now I was actually here. मैं 12,000 feet approximately में थी and I was just basking in the sun and doing nothing and casually looking at one of the highest mountains of the world, Dhaulagiri and Annapurna South. And I was so grateful for that experience because I know for a fact that not a lot of people or only a minuscule amount of people actually get to do that in their lives. आई थिंक हम सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस ब्रेक डे की. एक तो यही रीज़न था कि हम खैर लेक उतनी उससे नहीं कर पाते, एनर्जी से नहीं कर पाते. हम कर तो लेते ही बट फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते बिकॉज वी वर टू टायर्ड. और दूसरा तो यही था कि आई थिंक वी नीडेड अ डे टू सोक इन द ब्यूटी ऑफ खोपरा, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर जगह है वो रहने के लिए. और डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आप जा रहे हैं ट्रैक करने तो आप खोपरा में रहें एक दिन. पूरा दिन पता नहीं कैसे बीत गया और देखते देखते शाम हो गई. जैसे ही मैं बाहर निकली मैंने देखा कि द स्काई हैड इंटायरली चेंज कलर्स एंड आई वाज विटनेसिंग वन ऑफ नहीं बल्कि द बेस्ट सनसेट ऑफ माई लाइफ. द नेक्स्ट मॉर्निंग वी गॉट अप सुपर अर्ली, और क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम 5 बजे ही निकल जाएंगे खैर लेक के लिए, और ऐसा ही हुआ. हम टाइम से निकल गए थे. सुबह सुबह हमने ओट्स विथ फ्रूट्स खाए एंड ऑल्सो फ्राइड एग्स बिकॉज वी नीडेड ऑल द एनर्जी दैट वी कुड गेट. So it's 5:15 in the morning and we're leaving for Khayar Lake. It's a 15-kilometer trek और जब टी हाउस आएगा उसके बाद एकदम स्टीप है तो काफ़ी टाइम लगेगा. द गुड थिंग अबाउट टुडे वाज दैट कि हमारे पास एक बड़ा सा बैग नहीं था कैरी करने के लिए जो हम कर रहे थे एवरी डे. आज हम अपना बैग टी हाउस में ही छोड़ के आए थे और हमारे पास एक छोटा सा ही बैग था जो हमें ले जाना था. हमें कॉन्स्टेंटली अन्नपूर्णा साउथ, अन्नपूर्णा फैंक और धौलागिरी का एक बहुत ही क्लियर और ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा था. धौलागिरी इज़ वन ऑफ दोज माउंटेन्स विच मेक यू फील इंस्टेंटली काम. लाइक हम जब भी उसको देख रहे थे हमको एक बहुत ही काम फीलिंग आ रही थी और ऐसा लग रहा था ठीक है जब तक ये दिख रहा है तब तक सब सही होगा. स्टार्टिंग में तो हमसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था बिकॉज आई डोंट नो मे बी इट वाज द एल्टीट्यूड और हमारी बॉडी फिर भी यूज टू हो रही थी उस चीज़ के. बट धीरे धीरे एज वी गॉट अ मोमेंटम थिंग्स स्टार्टेड टू गेट बेटर और हम चल पा रहे थे एंड एक्चुअली एट अ गुड स्पीड. पूरे रास्ते बहुत ही ज़्यादा क्लियर व्यूज़ थे हिमालयस के और एक्चुअली कुछ कुछ ट्रिकी सेक्शंस थे, बहुत ज़्यादा नहीं. जैसे कुछ आइस ब्रिजेस थे जो हमें क्रॉस करने थे और कुछ आइस पैचेस थे, बट इट वाजंट एनीथिंग दैट वाज टू रिस्की और टू ट्रिकी, तो वी मैनेज टू डू देम.
हाँ मतलब ठीक है, बट वो नीचे को जा रहा है तो या टी हाउस आ गया। Nope, actually that was wrong information. टी हाउस नहीं आया था, एक abandoned टी हाउस sort of a thing था और एनिमल शेल्टर था, जो मुझे लगा देखते ही कि मे बी दिस इज़ टी हाउस हमें लगा, बट हम उसके पास गए तो हमने रियलाइज़ करा कि ये वो टी हाउस नहीं है। And there we saw the first glimpse of the tea house, the actual one, and we actually did it in a good time as well. We were there in less than 3 hours. So after 3 hours we just reached this tea house जहाँ पर हम कुछ खा रहे हैं। इसके बाद एक complete ascent है 1.5 hours का, and then we'll reach Khayar Lake. देखते हैं हमको कितना टाइम लगता है, बट यहाँ से बहुत सुंदर व्यू है। और लेट्स सी, खैर से ऊपर भी एक पॉइंट है, अगर हम टाइम से खैर लेक पहुँच गए तो हम उसके ऊपर भी जा सकते हैं, बट नहीं पहुँचे और थक गए हों तो हम नहीं जाएंगे। खर्च कर दिया। जैसे ही हम कुछ खा पी कर टी हाउस से निकले, वैसे ही बादल आना स्टार्ट हो गए और हमको ऐसा लग भी रहा था कि मे बी हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया टी हाउस में और हमको जल्दी निकल जाना चाहिए था और कोई व्यू नहीं दिखेगा। बट एनीवे वी स्टिल केप्ट गोइंग। पूरा बादलों से घिरा हुआ था और हम चलते गए। The climb after the tea house was insane. There were literally stairs जो बहुत ज़्यादा steep थी और हम थोड़ी breathlessness भी हो रही थी because now we were going close to 15,000 feet. जो खैर लेक थी वो 15,300 feet पे थी, तो अभी हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे थे, तो it was normal to feel this way. कुछ लोगों को थोड़ा बहुत हेडेक भी हो रहा था, बट इट वॉज माइल्ड एंड वी डिडंट एक्सपीरियंस एनीथिंग मेजर। तो हम चलते गए, हमारी स्पीड भी काफ़ी अच्छी थी।
जो लास्ट इंटेंस क्लाइम थी खैर लेक पहुंचने के लिए, वहाँ से जब हमने ऊपर देखा तो हमको लगा कि राइट वहाँ ही होगी खैर लेक. ऑब्वियसली कुछ दिख तो नहीं रहा था, बट वी थॉट ओके दिस इज़ वेयर द क्लाइम इज़ एंडिंग, और थोड़ा फ्लैट सा सरफेस दिख रहा है. बट व्हेन वी वेंट अप देयर वाज अ स्मॉल टेम्पल देयर, और एक्चुअली लेक थोड़ी सी और आगे थी. दो द क्लाइम वाज़न्ट दैट इंटेंस आफ्टर दैट, और थोड़ी सी ही थी, वहाँ पर नहीं थी जहाँ हमें लगा. इट वॉज काइंड ऑफ अ रिच वॉक टू द लेक. The happiness of reaching 15,300 feet hits different, trust me. हम इस एक मोमेंट के लिए कब से प्लान कर रहे थे, and now हम यहाँ पर हैं and we could actually see the Khayar lake right in front of our eyes. Oh, भाई साहब. So around the time when we reached the lake, there wasn't much of a view we could see. There was clouds everywhere, like we couldn't see any of the peaks that were around. So we decided to stay at the lake for a little bit longer because we hoped that it would clear, even if it was for a few seconds. But then we just explored, and we actually ended up staying there for close to 2 hours. Which was insane. I don't even know if we should have done it, but I think it was worth it because we did end up seeing the view. We even saw Annapurna South at one point, which was amazing. एक और व्यू पॉइंट था हायर अप. वी कुडंट फिगर आउट कि वो छोटा सा एक बिल्डिंग टाइप की दिख रही थी वो था या कहाँ था. वी डिडंट नो दैट, बट वी डिड नॉट एंड अप गोइंग देयर बिकॉज हमको लगा कि हम ऊपर गए उसके बाद व्यू नहीं दिखा तो इट विल बी इवन मोर डिसअपॉइंटिंग. एंड हमने सोचा जहाँ है वहीं का मज़ा लेते हैं, और वी वेंट अराउंड द लेक लिटरली एंड वी जस्ट enjoyed, chilled there for a while, for a long while actually. After 2 hours we decided कि अब तो हमको finally जाना चाहिए because the weather might get just too bad. So हम निकलने लगे, और जैसे ही हम निकल रहे थे there was this Swedish group जो आया था उसी टाइम एंटर किए थे वो लेक में, and they were clicking pictures and stuff, and we bid our goodbyes, farewell to them, and हम चले. और जैसे ही हम वहाँ से निकले after like 5 minutes it started raining. It wasn't even rain, it was hail. बट फॉर्चुनेटली उस टाइम पे इतनी नहीं हो रही थी, तो वी वर लाइक ठीक है जल्दी से वी विल मेक अप टू द टी हाउस जो नीचे था क्लाइम करके. तो किसी तरह हम फटाफट नीचे गए, एंड एज वी रीच द टी हाउस इट स्टार्टेड एकदम हेल स्टॉर्म हो गया. इट वाज क्रेज़ी बहुत ज़्यादा, एंड फॉर्चुनेटली हम एक टी हाउस के अंदर थे एंड वी फेल्ट सेफ एंड प्रोटेक्टेड. और कुछ टाइम बाद ही लाइक 15 मिनट्स बाद ही जो दूसरा ग्रुप था वो भी आ गए. वो तो काफ़ी ज़्यादा भीग कर आए, बट वो भी अंदर आ गए थे क्योंकि देयर वाज नो पॉइंट ऑफ गोइंग कंटिन्यूइंग आवर ट्रैक व्हेन द कंडीशंस वर सो बैड. सो जैसे ही ये स्टॉर्म थोड़ा सा काम हुआ तो स्वीडिश ग्रुप वो लोग जा रहे थे और उनके पास गाइड्स भी थे, तो हमें लगा कि इट वुड बी अ गुड आइडिया टू फॉलो देम क्योंकि बर्फ़ पड़ने के बाद हमें रास्ता बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. तो हमने अपना स्टार्ट किया चलना, बट रास्ते में फिर से काफ़ी ज़्यादा हेल स्टॉर्म बढ़ गया. बट एनीवे वी हैड नो ऑप्शन, वी केप्ट गोइंग. बीच में इट वॉज काइंड ऑफ स्कैरी ऑल्सो समटाइम्स बिकॉज इट वॉज लाइटनिंग लाइक क्रेजी, एंड इट वॉज एक्चुअली रियली क्लोज टू अस बिकॉज हमें थंडर की आवाज़ लाइटनिंग के ऑलमोस्ट सेकेंड्स के बाद आ रही थी, विच मेंट कि इट वुड बी रियली नियर टू अस, एंड एट अ पॉइंट वी वर लिटरली वॉकिंग ऑन अ रिच.
So बहुत scary as well as thrilling experience था. When we were almost reaching the Khopra Ridge, we were thoda sa away, like we could see the Khopra Ridge from there. I twisted my ankle and then slowly, steadily, I still managed to reach Khopra. And हम अंधेरा हो गया था, 8 बज गए थे तब हम पहुँचे खोपरा का टी हाउस. और honestly, reaching that place, I have never been so grateful because it was crazy out there. I have never experienced something so crazy. I couldn't even take footages. ये सब फ़ोन में जो थोड़ी सी random footages ली थी वो ही मैंने compile करी है, but I couldn't even take my camera out. It was so crazy. The night was spent celebrating an epic trek, and even though मेरा mood थोड़ा सा off था because मेरा ankle twist हो गया था, but I was actually very thankful कि I got to complete it. अभी भी पूरा complete नहीं हुआ था, but I got to go to the Khayar lake and come back safely even when the weather conditions were so bad. नेक्स्ट डे जब हम उठ के बाहर गए तो यूजुअली व्हेन यू गो आउट तो आपको अन्नपूर्णा ही या फिर धौलागिरी ही स्नो कवर्ड दिखता है. बट आज हम गए तो एवरीथिंग वाज स्नो कवर्ड लिटरली एंड इट वाज अमेजिंग. फिर हमने स्टार्ट करी अपनी जर्नी टूवर्ड्स पौधार. आज हमें सिर्फ डिसेंड करना था और एटलीस्ट 5000 फीट का डिसेंड करना था. तो हमने स्टार्ट किया एंड इट वाज रियली नाइस. वेदर बहुत अच्छा था आज. I met a lot of locals on the way, a lot of children, a lot of people in general on the way. And as an outsider, it's very hard for me to know what their life is like, but I know for a fact that it's really tough. But looking at their smiles, look at how content they seem, it is actually so grounding. In compared to that, I have such an easy life, and it is a lot luxurious than what they do. And I still crib about it sometimes. I'm still unhappy a lot of times with a lot of stuff. And experiencing such things actually puts me to my place and makes me check on my privilege. That looks like a big chicken. Oh. It is a big chicken. Yeah. As we reached the Paudwar village, we saw all these stone houses which looked incredible. The whole village was made out of stone, and these people had stacked woods, like piles and piles of woods, because that's how they survive the cold here. As we reached Paudwar, we ate lots and lots of food because we were too hungry. हमने सुबह खाया था I think थोड़ा सा breakfast, and उसके बाद we were just descending और हमने कुछ भी नहीं खाया था. तो we just had a lot of things, and plus also potato momos जो मैंने पहले कभी नहीं खाए थे, and they were surprisingly good. तो जो होटल ओनर थे जहाँ हमने खाना खाया पौधवार में, वो होटल धौलागिरी था उसका नाम, और वहीं से हमने उनको ही बोल के कैब कर ली थी अपने लिए, बिकॉज देयर वर रोड्स फ्रॉम पौधवार टू डिफरेंट प्लेसेस. तो हमने वहाँ से कैब करी, इवन दो वो कैब वाले ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, फिर भी हमने वो कैब करी और हम सीधे तातो पानी गए जहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स थे. हमने डिसाइड किया था कि अगर हम यहीं तक आए ही हैं तो पोखरा जाने से पहले हम पहले तातो पानी जाएंगे हॉट वाटर स्प्रिंग में, और फिर हम आगे की तरफ जाएंगे. तो प्लान ये हुआ कि हम तातो पानी में ही रुके रात को, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग वी जस्ट वेंट टू द हॉट स्प्रिंग्स, एंड द हॉट वाटर स्प्रिंग वाज ट्रूली अ ब्लेसिंग, स्पेशली आफ्टर वॉकिंग फॉर सो मैनी डेज विद सच अ ह्यूज बैग. फाइनली मसल्स को इतना रिलैक्सेशन मिला उस हॉट वाटर में. इट वाज अमेजिंग. हॉट वाटर स्प्रिंग से आने के बाद वी जस्ट हैड अ ब्रेकफास्ट एंड वी सून लेफ्ट फॉर पोखरा. ऑन अ वे टू पोखरा वी ऑल्सो स्टॉप्ड एट दिस ब्रिज कॉल्ड द गंदाकी गोल्डन ब्रिज, विच इज़ 500 plus meters bridge, and it was huge. We just spent some time there, walked around, and the view from there was beautiful as well. उसके बाद हमने फिर से अपनी जर्नी शुरू करी पोखरा के लिए.
और कुछ ऐसे ही ख़त्म हुआ हमारा खोपरा रिच ट्रैक एंड इट इज़ एक्चुअली समथिंग दैट आई वुड नॉट फॉरगेट easily or would not forget at all because it was that kind of an experience. इसके बाद हमने कुछ दिन पोखरा में बिताए बट उसका वीडियो दूसरा होगा बिकॉज़ पोखरा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें.